सो है गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो गाइस। सो आज की वीडियो में गाइस हम लोग एक ओल्ड मैन ड्राइंग पोर्ट्रेट करने वाले विद यूज़ ऑफ ऑयल पेस्टल कलर्स। जो मेरे पास ये वाले है गाइस, कैमलिन कंपनी के है गाइस, ऑयल पेस्टल कलर्स 50 शेड्स के गाइस। और ये कलर हम लोग ने अपने बचपन में या स्कूल टाइम्स में हमने बहुत इस्तेमाल किया होगा गाइस, बट मैंने कभी भी ये कलर्स इस्तेमाल यूज़ नहीं किया। फर्स्ट टाइम है गाइस मैं जो यूज़ करता था वो है सिर्फ क्रेयॉन्स कलर यूज़ करता था गाइस। सो ये फर्स्ट टाइम है मेरे लिए ये कलर्स। सो इससे आज पूरी ड्राइंग होने वाली है गाइस, और इसका एंड आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। और ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस, कि इसका ड्राइंग में इस्तेमाल करने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस दूंगा कि कैसा मुझे लगा ये कलर्स का इस्तेमाल करके गाइस, और कैसी ड्राइंग हुई है गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ गाइस।
ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है गाइस। ड्राइंग कुछ इस तरीक़ा से लग रही है गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ऐसी ड्राइंग हुई है गाइस। ड्राइंग में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है गाइस, 50 में से 25 कलर्स का इस्तेमाल किया है गाइस, और इसमें ब्लेंड भी किया है गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ जगह यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्लेंड किया हुआ है गाइस यहाँ पे भी। और सबसे ज़्यादा ब्लेंड तो बैकग्राउंड्स में हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। उसलिए ब्लेंड के लिए मैंने जो इस्तेमाल किया वो अपने फिंगर्स का था गाइस, फिंगर से ब्लेंड की थी, और कॉटन का इस्तेमाल किया था। और टेक्सचर्स, डिटेलिंग टेक्सचर्स जो बियर्ड के लिए है, ये फोटो में जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये वाइट टेक्सचर्स यहाँ पे, वो मैंने पोस्टर कलर, वाइट पोस्टर कलर से किए गाइस, डिटेलिंग वर्क किए गाइस। बाकी के सब तो क्रेयॉन्स नहीं, ऑयल पेस्टल कलर से किए हैं गाइस, जो कुछ ऐसे दिख रहे हैं गाइस। I hope so you like this video. If you like this video, please don't forget to like and share this video to more and more people, and don't forget to subscribe my channel. Please subscribe करो यार।